Assalamu alaikum, dear friends. Are you ready to crack your KPPSC Physics test? In this video, we are solving a full previous SS lecturer physics paper with clear concept. Watch carefully and stay with us. So the first MCQs in the previous SS lecturer test was when an electron is moving, then a wave associated with this electron is known as. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास मैटर वेव्स है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है तो ये मैटर वेव्स कंसीडर किया जाएगा। सो द सेकंड एमसीक्यूज वाज द डायफ्रैक्शन ऑफ 10 फ्रॉम स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड टू एस्टिमेट, यानी ऑप्शन ए अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मेटल्स, नंबर बी नेचर ऑफ एटम्स, नंबर सी नेचर ऑफ एटम्स इन मेटल्स, नंबर डी position of atoms in metalloids. So the correct option is arrangement of atoms in metal. So the third MCQ was consider a charged particle that is accelerated through a potential difference V. Then the kinetic energy of the particle. क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्ज करें एक चार्ज पार्टिकल है जो कि एक्सिलरेट होती है एक पोटेंशियल डिफरेंस में, तो ये बताइए कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, कि इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और रिमेन द सेम, और द काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीजेस और इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. So the correct option is option C. So the kinetic energy will be increases. MCQs number 4 was, as we know that electrons are in the state of motion in atoms, then the energy of each electron in atom is either this energy is quantized or continuous or radial or randomized. So this will be the quantized energy. The MCQs number 5, which were also in the previous paper. So the MCQs is the electromagnetic radiation consists of small quantum particles that are known as. So that are known as photons. MCQs number 6. Considering two quantities are inversely proportional to each other, then the graph between these quantities will be. फर्ज करें दो क्वांटिटीज़ है जो कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो ये बताइए कि ग्राफ किस तरह बनेगा। यानी ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन कटिंग द एक्सिस, ऑप्शन बी अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, नंबर सी अ पैराबोलिक करो, नंबर डी अ हाइपरबोलिक करो. सो दिस इज द हाइपरबोलिक करो. MCQ number 7, when current is parallel to magnetic field, force on conductor is 0. So we know that the force formula F, which is equal to IL cross B. So there is sine theta, so the sine 0, so both are parallel, there should be sine 0 and sine 0, which is equal to 0. It means the force is 0. MCQ is number 8. If we have two capacitors connected in series whose magnitude are 2F and 4F, what single capacitance is equivalent to this combination? क्वेश्चन में कहा गया है कि टू कैपेसिटर है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है और वो कैपेसिटर इनमें एक की कैपेसिटी 2 फेराड है और दूसरे की 4 फेराड है, तो ये बताइए कि उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कौन सा होगा। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. Because we know that this is the formula for finding the C equivalent and C for series combination of capacitors. MCQ is number 9, which stated that let us have 5 coulombs of charges placed on a thin walled conducting shell. Once the charge has come to rest,
the electric potential inside the hollow conducting shell is found to be 0 होगा या uniform inside the sphere and equal to the electric potential on the surface of the sphere. मतलब इनसाइड की जो पोटेंशियल है और सरफेस की पोटेंशियल है ये दोनों सेम होगी. सी नंबर स्मॉलर देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर. और ऑप्शन डी वेरिंग एज 1/r², या पोटेंशियल 1/r² चेंज होगा. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. So we know that when charge is placed on a thin wall conducting shell, all excess charge reside on the outer surface. ठीक है. इनसाइड अ कंडक्टिंग शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ज़ीरो. जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा तो हमारे पास पोटेंशियल कांस्टेंट होगा. तो इनसाइड पोटेंशियल और आउटसाइड यानी इनसाइड पोटेंशियल और सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल हो ये दोनों सेम होगा. MCQ number 10, which is stated that for a parallel plate capacitor with plate area A and plate separation B, the capacitance is proportional to which of the following? A divided by D, या A divided by B square, या A divided by D square, or A divided by B. तो correct option is option D. So we know that the capacitance is directly proportional to plate area and inversely proportional to plate separation. तो ये area है और ये separation B है. MCQ number 11, we stated that when a constant potential difference is applied across the plate of a parallel plate capacitor, neglecting any edge effects, then the electric field inside the capacitor is constant, या varying as 1/r², या 0, या decreasing as one move from the positive to the negative plate. So the electric field will be constant. So this is the explanation for this MCQs. MCQ number 12 stated that consider we have a copper rod whose diameter is 1 centimeter and carries a current of 5 ampere. The current is distributed uniformly throughout the rod. The magnetic field halfway between the axis of the rod and its outside the edge is. Magnetic field halfway will be 0 होगा, या pointing radially outward, या pointing radially inward, या circles the axis of the rod. So option D is the correct option because we can find the magnetic field by right hand rule. So the thumb indicate the direction of current while the curling finger indicate the direction of magnetic field. This is the explanation. MCQ number 13, which is given that in an experiment, division and germer scatter electrons from a crystal of nickel. The scattered electron formed a strong diffraction pattern. The important conclusion drawn from the experiment is electron acted like a wave, या electron acted like a particle. Number C, electron acted like a quantum particle, या electron have dual nature. So this experiment, असल में इस एक्सपेरिमेंट से यह साबित हुआ था कि इलेक्ट्रॉन वेव बिहेव करती है. MCQ number 14, which is given that when a physical property such as charge exists in discrete packet rather than in continuous amount, the property is said to be discontinuous, या abrupt, या quantized, या non-continuous. So this is known as the quantization of charge. MCQ number 15, which is given that if the distance between the earth and moon were half, the force of the attraction between them, यानी 1/4 is great, या 1/4 is great, या twice is great, या 4 times. The force will be increased 4 times.
MCQ number 16. If we have a galvanometer and want to convert it into a voltmeter, what process we have to adopt? अगर हमारे पास गैल्वानोमीटर है और हम ये चाहते हैं कि इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करें, तो हमको कौन सा प्रोसेस करना होगा गैल्वानोमीटर के साथ? यानी उसके साथ हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, या हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और लो रेजिस्टेंस इन सीरीज़, या लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो याद रखिए, हम गैल्वानोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाएंगे तो फिर ये वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। MCQ number 17. The greatest induced EMF will occur in a straight wire moving at constant speed through a uniform magnetic field when an angle between the direction of the wire of motion and the direction of the magnetic field is. तो हमारे पास 90 डिग्री पे मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। MCQ number 18, which is given that if two light sources will interference constructively with maximum amplitude, then the path difference between them is. For constructive interference, so the difference should be one wavelength. MCQ number 19, which is given that when satellite is observed to move in a circle about the earth at a constant speed, this means that the force acting upon it is parallel to the direction of the satellite instantaneous velocity, or 0. Option C, perpendicular to the direction of satellite instantaneous velocity, या none. तो ये perpendicular force होगा। MCQ number 20, which is given that when a pendulum bob is vibrating, then we have kinetic energy as well as potential energy. Then the relationship between kinetic energy and the potential energy of the pendulum bob is, yani kinetic energy is greater than potential energy. Option B, kinetic energy is less than potential energy. Option C, kinetic energy will be equal to potential energy. Option D, kinetic energy plus potential energy is equal to constant. तो याद रखें, this is called the law of conservation of energy. The total energy should be constant. MCQ number 21, which is given that when an atomic nuclei emits a beta particle, one of its neutrons disintegrate into one of the following set of particles. Does it disintegrate into? क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एक न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल को एमिट करता है और ये बीटा पार्टिकल न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेशन की वजह से होता है, तो ये बताइए कि ये न्यूट्रॉन जब डिसइंटीग्रेट होता है तो कौन कौन से पार्टिकल में ये कन्वर्ट होगा? अ पॉजिट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी अ प्रोटॉन एन इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो, option C, a proton, an electron and a positron, option D, a neutrino and an antineutrino. तो जब न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होता है तो ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो कि बीटा पार्टिकल है और साथ में एंटी न्यूट्रिनो इमिट करते हैं। MCQs number 22, which is given that if you start with 24 grams of radioactive element with a half-life of 1 month, how many grams of the radioactive element will be left after 2 months? क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आपके पास 24 ग्राम रेडियोएक्टिव मटेरियल है जिनकी हाफ लाइफ 1 मंथ है, यानी 1 मंथ बाद ये हाफ हो जाएगा यानी 12 ग्राम, तो ये बताइए कि 2 मंथ्स के बाद ये कितना ही रहेगा। तो एक महीना उसका हाफ लाइफ है, तो ये 1 महीना गुजरने के बाद 12 ग्राम बाकी रह जाएगा और मज़ीद दूसरा महीना जब ख़त्म हो जाएगा तो 12 को मज़ीद 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 6 ग्राम रेडियोएक्टिव मटेरियल बाकी रहेगा। MCQ number 23,
as we know the fundamental particles like quarks that can exist in proton and neutrons, let tell us that how many color of quarks are believed to exist. क्वेश्चन में कहा गया है कि हमको पता है कि क्वार्क्स फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पाए जाते हैं। तो ये बताइए कि क्वार्क्स के कितने कलर हैं। तो क्वार्क्स के 3 कलर्स हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटम क्रोमोडायनामिक, क्वार्क्स हैव 3 कलर: ब्लू, ग्रीन, रेड, and these are not the actual real color. MCQs number 24. A block of wood initially at rest slides down an inclined plane, neglecting friction. The kinetic energy of the block at the bottom of the plane is, in option A, all converted into heat, option B, equal to its potential energy, option C, less than its kinetic energy at the top of the plane, dependent on the material. So it means that here again this is law of conservation of energy, so that will be equal to its potential energy. This is the explanation of this MCQs. MCQ number 25. Consider we have 2 types of water such as seawater and fresh water. Now when a boat is floating on the surface of both types of water, a boat will float higher in fresh water than in seawater, lower in fresh water than in seawater, at the same level in both, any of the above depending upon its shape. तो याद रखें कि लोअर इन फ्रेश वाटर देन इन सी वाटर, क्योंकि हमारे पास सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत फ्रेश वाटर की। MCQ number 26. There are 4 fundamental forces in nature. A particle has been associated with each of these 4 forces. Therefore, gluon associated with. क्वेश्चन में कहा गया है कि नेचर में 4 किस्म के फोर्सेस हैं, तो ये बताए कि ग्लोवान कौन से फोर्स के साथ एसोसिएटेड है, यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या स्ट्रॉन्ग फोर्स या वीक. So gluon are associated with strong nuclear force. Gluon act like a glue. MCQ number 27. Consider a pendulum that is suspended from the ceiling of a railroad car and is observed to hang at an angle of 10 degrees to the left of the vertical. Which of the following answer could explain this phenomena? Number A. The railroad car is at rest. The railroad car is accelerating to the left. Railroad car लेफ्ट की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है. The railroad car is moving with constant velocity to the right. The railroad car is accelerating to the right. तो याद रखें कि ये पेंडुलम लेफ्ट साइड पे 10 डिग्री इस तरह बनाते हैं विद वर्टिकल, तो इसका मतलब ये है कि railroad car will be accelerating to the right side. The option number D is the correct here. The railroad car is accelerating to the right. तो ये option नहीं है, option D is the correct option. So MCQ number 28. If we place 10 coulomb of charge on a solid copper sphere, if the charge has come to rest, the electric potential inside the sphere. Again वही question है. So तो याद रखिए कि हमेशा potential uniform inside the sphere and equal to electric potential on the surface of the sphere. MCQ number 29, which is given that if we consider 2 negative point charges having separation 2 meter apart and repel each other with a force of 2 Newton, यानी दो नेगेटिव पॉइंट चार्ज को एक दूसरे से 2 मीटर के फासले पर रख दिया गया जो एक दूसरे के ऊपर 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है. When the distance between the charge is double, अगर इन दो चार्जेस के बीच फासला डबल कर दिया जाए, यानी 2 मीटर के बजाय 4 मीटर कर दिया जाए, the force between them is.
यानी 1/4 is great. MCQ number 30. We have two hockey sticks of unequal mass and connected by a spring of negligible mass rest on a horizontal frictionless surface. If the spring is released, then the stick move apart the center of mass of two sticks. So option A given that move in a circle के spring release करने के बाद ये move in a circle या move in the direction of greater mass या remain stationary या move in the direction of small mass. तो ये रिमेन स्टेशनरी होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल मोमेंटम ज़ीरो है, क्योंकि ये स्टिक और ये स्टिक उनके बीच स्प्रिंग लगा हुआ था, तो ये एक पूरा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। उसका मोमेंटम, स्टिक का मोमेंटम और स्टिक का मोमेंटम जब हम इसको कंबाइनली ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल मोमेंटम ज़ीरो होगा। तो इसी वजह से सेंटर ऑफ मास शुड बी स्टेशनरी। MCQ number 31. If water is warmed from 0 degree to 6 degree Celsius, which of the following things happen when the water? क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम वाटर को वार्म करें बिटवीन 0 to 6 डिग्री, तो ये बताइए कि क्या होगा उसके साथ। तो याद रखिए, जब हम 0 और 6 डिग्री के बीच अगर पानी को वार्म करेंगे तो 0 to 4 डिग्री ये पहले कंट्रैक्ट होगा, उसके बाद ये एक्सपेंड करेगा ड्यू टू एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। MCQ number 32. When the energy is stored in a body as thermal or internal energy, the stored energy must be in heat, form of radiant energy, number B molecular kinetic energy only, या molecular potential energy only, या both kinetic and potential energy। अगर एक जिस्म में हम एनर्जी को स्टोर करेंगे थर्मल या इंटरनल एनर्जी, तो बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये स्टोर होगा। MCQ number 20, MCQ number 33. When white light passes through a red plate of glass and then through a green plate of glass, which of the following things occur? क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वाइट लाइट को पास किया रेड प्लेट से और फिर उसके बाद रेड प्लेट से जो लाइट पास हुई फिर उसको ग्रीन प्लेट से पास किया गया। तो ये बताइए कि ग्रीन से कौन सा लाइट पास होगा या नहीं, यानी द लाइट हैज एब्जॉर्ब्ड, या नंबर बी द लाइट दैट emerges is a combination of red and green, number C the light that emerges lack only its red and green component, the light that emerges is green। तो हमको ऑलरेडी पता है कि वाइट लाइट कंटेन 7 कलर, जब ये रेड प्लेट से पास होगा तो ये ऑल कलर को एब्जॉर्ब करेगा एक्सेप्ट रेड कलर के, तो रेड कलर उससे पास हो जाएगा, तो इसी वजह से ये रेड दिखाई देगा हमें। और उसके बाद उस रेड लाइट को हम ग्रीन प्लेट से पास करेंगे, तो याद रखिए कि ये ओनली रेड लाइट था, तो यहाँ पे ये ग्रीन प्लेट इस रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इट मीन द लाइट हैज एब्जॉर्ब्ड। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। MCQ number 34. A metal ball on an insulated stand is touched by a positively charged glass rod. What happened to the metal balls? Does it, यानी ये बॉल gain proton and lose electron, या gain protons, या gain more proton than electrons, या lose electron। MCQ 35. An electron and a proton are moving at the same speed in a circular path and the same uniform magnetic field. The radius of the path of the proton is। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, जो कि दोनों सेम स्पीड पे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं एंड सेम मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये बताइए कि रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोटॉन, कि प्रोटॉन की रेडियस ऑफ द पाथ क्या होगा बनिस्बत इलेक्ट्रॉन के, यानी द सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन की जो रेडियस है सर्कुलर वो भी इलेक्ट्रॉन की जो है
वो प्रोटॉन की v होगा, या अबाउट 2000 टाइम लार्जर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या अ लिटिल लार्जर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो याद रखें कि प्रोटॉन की मास बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 1840 टाइम प्रोटॉन हेवी है। तो ये हमारे पास फार्मूला है जो कि उसका रेडियस डिपेंड करती है मास पे। स्पीड दोनों की सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, चार्ज दोनों के ऊपर भी सेम है। जिसकी मास ज़्यादा होगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा, क्योंकि मास ऑफ द प्रोटॉन इज़ लार्जर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। MCQ number 36. To develop the correct mathematical description of the distribution of radiated energy of a black body concerning wavelength for a given temperature, Planck found it necessary to assume that molecular oscillator of the black body emitted and absorbed, यानी no radiant energy या radiant energy in a continuous form या radiant energy in a discrete unit or quanta या none of these। तो याद रखें फ्लांक पहला बंदा था जिसने कहा कि ये लाइट जो एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, दीज आर इन डिस्क्रीट यूनिट आर क्वांटा विच इज नोन एज इज इक्वल टू HF। MCQ number 37. When someone performs skating on the surface of the ice skating is possible and practical because of the unique property of water, because coefficient of kinetic friction of steel on frozen water decreases with decreasing temperature. Number B, ice radially sublimes. Number C, the melting point decreases with increasing pressure. Ice is a good thermal insulator। तो याद रखें ये स्केटिंग जो आइस के थ्रू पॉसिबल है, ये द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग प्रेशर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C। MCQ number 38. There are many fundamental particles like electrons and neutrino are a subset of। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पार्टिकल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो कौन से सबसेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी आइदर दे आर फोटॉन्स या लेप्टॉन्स या मीज़ॉन या बेरियन। तो याद रखें इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनो आर लेप्टॉन्स। MCQ number 39. Consider a perfectly spherical bubble of air is suspended in a tank water. A beam of light consisting of parallel rays passing through the bubble. As the light emerges from the opposite side of the bubble, the light rays are, the correct option is diverge। MCQ number 40. As we know, the Gauss law of electricity, Gauss law of magnetism, Faraday law of induction, and Ampere law form the basic equation of electromagnetism, which is known as Coulomb's equation, Volta equation, या Fermi equation, या Maxwell equation। So these are Maxwell equation। MCQ number 41. When a man is sitting in a frictionless chair, when someone decides to have some fun with man and rotate the chair, when the man is spinning and want to slow down, then he extend his arm and legs, the reason is, यानी वो अपने decrease his angular momentum या increase his angular momentum या increase his moment of inertia या change the direction of the momentum vector। तो याद रखें ये increased his moment of inertia है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये इनर्शिया है। तो बंदा चाहता है कि मेरा एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए, ठीक है, इसको कम करना चाहता है। तो इसको कम करने के लिए उनको इनर्शिया को बढ़ाना होगा। इनर्शिया की इक्वेशन है I इज इक्वल टू mr²। जब वो अपने आर्म्स और लेग्स को एक्सटेंड करते हैं तो रेडियस बढ़ता है, जो जब रेडियस बढ़ेगा तो जाहिर बात है कि इनर्शिया क्या होगा, इनर्शिया की वैल्यू बढ़ेगी और उसकी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी। So the correct option is option C। MCQ number 42, which is given that consider V is the speed of a particle, C is the speed of light, then the Galilean transformation is valid only। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास
उन ऑब्जेक्ट के लिए है जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो, यानी स्पीड अप्लाइड से, यानी ये रूटीन की स्पीड है। MCQ number 43, according to Einstein's special theory of relativity, time and length are। तो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू टाइम हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटीज है। MCQ number 44, the Lorentz transformation is applicable when the velocity v of a particle is, यानी v is less than c, v is comparable to the speed of light, या v is greater than c, या none। तो ये v is comparable to the speed of light, for this the Lorentz transformation is applicable। MCQ number 45, the general theory of relativity is valid for। तो याद रखिए जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास बोथ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है। Thank you. Don't miss the next lecture for more conceptual MCQs. So please like, subscribe and share with your friends.